तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with 7 December 2021 current affairs MCQs, and we will be starting with our 10 minutes and 10 plus current affairs series. So let's move on to our first question. If you are already a member of our Insta family or the Telegram family, you might be aware of this first and second question. I have informed and updated these particular dates over there. So the first question goes, Indian Armed Forces Flag Day is celebrated on, and if not, please do join. The links are in the about section of this channel. Okay, so the first question is, Indian Armed Forces Flag Day is celebrated on. Very important, right? Related to defense exams, star market. So options are 6 December, 5th December, 7 December and 8 December. So the right answer here is C, that is 7th December. So every year on 7 December, Indian Armed Forces Flag Day is celebrated. Okay. So we'll move on to the next question. That is, Indian Armed Forces Flag Day was first celebrated in the year. पहली बार कब मनाया गया था? It was in the year 1950, 1949, 1947 or in the year 1960. So इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, that is 1949. So I will give you a bit more information about this particular day. So it is known as Flag Day. आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा ना कि फ्लैग डे क्यों? It is because small flags are distributed all across the nation. Distributed all across the nation on this day. Okay, and Armed Forces Flag Day Fund. Indian Armed Forces Flag Day Fund. This fund is initiated today, and citizens can generously donate it. So this particular day has its aim to honor the martyrs as well as the serving personnel. और अगर कोई सिटीज़न वगैरह हेल्प करना चाहे तो वो जनरसली ये फंड में उसका जो भी डोनेशन है वो उसका डोनेशन दे सकता है, एंड देन ही और शी विल गेट अ फ्लैग और अ टोकन लाइक अ स्टिकर और समथिंग, एंड हेंस इट इज़ नोन एज फ्लैग डे ऑल अक्रॉस द नेशन. ठीक है, एंड ये इम्पॉर्टेंट है. इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द ईयर 1949 एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड every year on the date 7 December. Moving ahead, which is the India's top arms company according to the list released by SIPRI in the year 2021? Okay, so we have the options HAL, BEL, OFB or L&T. HAL मतलब Hindustan Aeronautics Limited, BEL is Bharat Electronics Limited, OFB is Ordnance Factory Board and L&T is Larsen and Toubro. Okay, so the right answer is option A, that is HAL. अभी इसके मैं रैंकिंग्स बता देता हूँ आपको. HAL was ranked 42nd in top 100. टॉप 100 ओवरऑल वर्ल्ड लिस्ट जो निकाली थी तो उसमें इंडिया का HAL का रैंक था 42nd. देन BEL was on the rank 66th, OFB was on the rank 60th. ठीक है, एंड SIPRI stands for Stockholm International Peace Research Institute. Okay, if you aren't aware about this, please note it down. Larsen and Toubro was not in the top 100 companies. Okay, this was the list recently which was released by the SIPRI in the year 2021. Moving ahead, GIFT. Very easy question. GIFT is an under construction business region located in Gandhinagar, Surat, Ahmedabad or Rajkot. So you might be aware that GIFT is located in Gujarat, but it is located in which particular district? So options are Gandhinagar, Surat, Ahmedabad or Rajkot. So here the right answer is option A, that is Gandhinagar. तो आपको मैं GIFT का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ. GIFT stands for Gujarat International फाइनेंस टेक सिटी. ठीक है, दैट इज गिफ्ट, GIFT, टेक सिटी. वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन. इंडियाज फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इज इन SEZ विशाखापट्टनम, SEZ आंध्र प्रदेश, गिफ्ट सिटी और मुंबई. SEZ मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक
these particular zones have a specific form of I can say a specific form of different types of laws, trade laws, और वहाँ बहुत easy होता है business वगैरह के लिए बढ़ावा दिया जाता है specific regions में. Okay, so here the right answer is option C, that is gift. अगर आपने ये ध्यान से थोड़ा देखा होगा, थोड़ा common sense लगा दोगे तो यही मैंने आंसर आपको बता दिया था. फाइनेंस टेक सिटी है ना ये, इसीलिए इट इज़ द फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ऑफ इंडिया. मूविंग अहेड, 6th, India's first woman psychiatrist is Dr. Kamini Rao, Dr. Sharda Menon. Here's a spelling mistake. S.A. Sharda Menon. Then Dr. Nandini Munkar and Dr. V. Shanta. So the right answer is option B, Dr. Sharda Menon. This was in news because she unfortunately became immortal. Okay, उनकी डेथ हो गई थी इसीलिए. And she was one of the most famous women psychiatrists of India. She has written and authored many of the different types of publications, different types of books and papers published in mental health as well as rehabilitation process, etc. So also remember that she was the first woman psychiatrist of India, Dr. Sharda Menon. Okay, Sharda Menon, Dr. Sharda Menon. SH नहीं है. Moving ahead, 7th question. Biggest arms importer from Russia in the year 2021 is? Option A is India, China, Israel or UAE. So the right answer is of course that is option A, India. थोड़ा common sense, चाइना तो खुद का बनाती है, इसराइल भी खुद बनाएगी, UAE रशिया से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेगी. राइट, सो दो ही ऑप्शन बचते थे आपके पास, यूएई और इंडिया. आपको पता है इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है. इंडिया इज़ पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स more of like developing the arms sector, so India would be the answer. थोड़ा common sense से आप आंसर सही बता सकते थे. Moving ahead, India Russia signed a deal with Putin during Putin's visit to India in 2021 regarding which rifle? एक specific rifle है, उसके ऊपर एक डील हुआ था इंडिया रशिया के बीच जो रिसेंट 2+2 मीटिंग चल रही है उसमें. ओके, so the rifles are AK-51, AK-201, AK-203 Kalashnikov rifle and AK-47 rifle. So here the right answer is option C, that is AK-203 Kalashnikov rifle. Okay, moving ahead, 9th question. Which country recently named its first gender equal cabinet? France, New Zealand, Australia or Germany? So here the right answer is option D, Germany. अभी इसका मैं थोड़ा आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ. तो जर्मनी में एक लीडर है Olaf Scholz. So he has recently named his first gender equal cabinet. What he did was 16 member जो cabinet है उसमें 8 females and 8 males है. Fine. And he is from the party SPD, that is Social Democrat. Social Democrat party से है वो. Okay, and he will be the chancellor after एंजेला मर्कल, who is upcoming. उन्होंने बस नेम किया है एंजेला मर्कल. एंजेला मर्कल जो चांसलर है जर्मनी के, उसके बाद अभी ओलाफ स्कॉल्स होंगे. मूविंग अहेड, ऑंग सान सू की इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? वेरी फेमस लीडर. एक हिंट है, शी इज करेंटली इन प्रिजन एंड देयर आर वेरियस केसेस अगेंस्ट हर. सो ऑप्शंस आर मालदीव्स, म्यांमार, भूटान एंड थाईलैंड. वेरी इजी, राइट? द राइट आंसर इज बी, म्यांमार. अब ये न्यूज़ में थे क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए हुए हैं एंड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ड्यू टू दीज केसेस वुड बी 102. तो ये न्यूज़ में चल रहा था, उनके ऊपर केसेस बहुत है, करप्शन, ये वो, फिर सपोर्ट करने का, ये सब. एंड म्यांमार इज़ रिसेंटली देयर इज़ अ मिलिट्री कॉप, राइट? मिलिट्री हैज़ ओवरटेकन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. So Myanmar and its government is in the news, and she is the leader of the democratic government, that is Aung San Suu Kyi. Moving ahead, we have the homework question, that is which country has recently announced that it will not send its official delegation for Winter Olympics 2022 Beijing? So the options are South Korea, US, France and India. So comment the answers below. If you know, it's great. If you not, then please find it out and have a look.
Do remember, make notes out of this, and as I said, please join us on Instagram, Telegram, YouTube, everywhere where you can. Telegram पे आपको PDF मिल जाएगा, Instagram पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे और YouTube पे आपको कंटेंट मिल जाएगा यार, ज्वाइन कर लो. So with that, I will be sharing this PDF as well in the Telegram channel. So the answers भी दिए मैंने, तो आपके पास अगर नोट्स वगैरह आप बना सकते हो डायरेक्टली PDF के ऊपर, so that it will be easier for you. तो ये PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा. So with that, that's Screen Guru for you. Have a great time ahead. All the very best. 1 minute 37 seconds later. ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए. करो फिर, हमारी पावर है. जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो. आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई.